MCQ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 करने वाले हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 117। ये पूछ रहे हैं इन ए क्रॉनिक स्मोकर अ हाईली मैलिग्नेंट एग्रेसिव एंड मेटास्टेटिक लंग कार्सिनोमा इज। तो बोल रहे हैं हाईली मैलिग्नेंट एग्रेसिव मेटास्टेटिक lung cancer in chronic smoker कौन सी होती है? ऑप्शन 1 स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन 2 स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन 3 एडिनोकार्सिनोमा या ऑप्शन 4 लार्ज सेल कार्सिनोमा। फिर से देखिए हाईली मैलिग्नेंट एग्रेसिव मेटास्टेटिक लंग कैंसर इन क्रॉनिक स्मोकर इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा या लार्ज सेल कार्सिनोमा। एंड द राइट आंसर इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118। A 30-year-old male Kalu with a history of sexual exposure comes with a painless indurated ulcer over the penis with everted margin. The diagnosis is। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं 30 year male with a history of sexual exposure comes with a painless indurated ulcer have painless indurated ulcer on penis with everted margin ठीक है ना। तो डायग्नोसिस क्या होगी? ऑप्शन 1 सिफिलिस, ऑप्शन 2 शैंक्रॉइड, ऑप्शन 3 लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम, ऑप्शन 4 ग्रैनुलोमा इंग्विनेल। फिर से देखिए 30 year male with history of sexual exposure have painless indurated ulcer on penis with everted margin. What is the diagnosis? Syphilis, chancroid, LGV या granuloma inguinale? And the right answer is syphilis. Question number 119 करेंगे। Question number 119 पूछ रहे हैं all are true about Neisseria gonorrhea except Neisseria गोनोरिया, ठीक है ना। ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट अबाउट नेसिरिया गोनोरिया, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट ऑप्शन 1 इट इज ग्राम पॉजिटिव कॉक्काई, ऑप्शन 2 causes urethral stricture, option 3 involves seminal vesicle and spread to epididymis, involve seminal vesicle and epididymis and epididymis. Option 4 drug of choice is ceftriaxone. फिर से देखिए about Neisseria gonorrhea all are true except gram positive cocci causes urethral stricture, involves seminal vesicle and epididymis, a drug of choice is ceftriaxone. And the right answer is gram positive cocci. Neisseria gonorrhea gram positive cocci नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 पूछे हाइपोग्लाइसेमिया इज सीन इन ऑप्शन 1 एक्रोमेगाली, ऑप्शन 2 Cushing syndrome,
क्यूशिंग सिंड्रोम। ऑप्शन 3 हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। या ऑप्शन 4 हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म। फिर से देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया सीन इन एक्रोमेगाली, क्यूशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म। एंड द राइट आंसर इज हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्वेश्चन 121 देखेंगे। क्वेश्चन 121, द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ सिस प्लेटिनम इन ए पेशेंट यूजिंग इट फॉर इसोफेजियल कार्सिनोमा इज। ठीक है ना, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट of cisplatin used for esophageal cancer is option 1 acute tubular necrosis, option 2 thrombocytopenia, option 3 hepatic failure, and option 4 कार्डियोमायोपैथी। फिर से देखिए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सिस्प्लेटिन यूज फॉर इसोफेजियल कैंसर इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेटिक फेलियर, कार्डियोमायोपैथी। एंड द राइट आंसर इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है ना, द कॉमनेस्ट हेपेटोट्रोफिक वायरस कॉजिंग इंक्रीज क्रॉनिक कैरियर स्टेट इज। ठीक है ना, तो मोस्ट कॉमन हेपेटोट्रोफिक वायरस, हेपेटोट्रोपिक वायरस इंक्रीजिंग क्रॉनिक कैरियर स्टेट, मोस्ट कॉमन हेपेटोट्रोपिक वायरस इंक्रीजिंग क्रॉनिक कैरियर स्टेट इज ऑप्शन 1 HEV, hepatitis E virus, option 2 hepatitis A virus, option 3 hepatitis B virus, या ऑप्शन 4 hepatitis C virus। देखिए, मोस्ट कॉमन हेपेटोट्रोपिक वायरस इंक्रीजिंग क्रॉनिक कैरियर स्टेट इज hepatitis E virus, hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, and the right answer is hepatitis C virus। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, एक मिनट, हाँ, 123 पूछ रहे हैं, इन पेशेंट विथ एक्यूट लीवर फेलियर द बेस्ट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इज। तो पेशेंट विथ एक्यूट लीवर फेलियर, बेस्ट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर क्या है इसमें? ऑप्शन 1 सीरम एल्ब्यूमिन, ऑप्शन 2 सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन, ऑप्शन 3 सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन 4 फैक्टर 5 एस्टिमेशन। फिर से देखिए, पेशेंट विथ एक्यूट लिवर फेलियर बेस्ट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इज सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन, सीरम बिलिरुबिन या फैक्टर 5 एस्टिमेशन। एंड द राइट आंसर इज फैक्टर 5 एस्टिमेशन। क्वेश्चन 124 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, इंजेक्शन ऑफ आर्सेनिक कॉजेस, आर्सेनिक इंजेक्शन कॉजेस। ऑप्शन 1 हेपेटिक कार्सिनोमा, ऑप्शन 2 हेपेटिक एडिनोमा, ऑप्शन 3 नॉन सिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस, या ऑप्शन 4 हेपेटिक सिरहोसिस। फिर से देखिए, आर्सेनिक इंजेक्शन कॉजेस हेपेटिक कार्सिनोमा, हेपेटिक एडिनोमा, नॉन सिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस या हेपेटिक सिरहोसिस। एंड द राइट आंसर इज नॉन सिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 125 क्या पूछ रही है लोग? इन बर्किट लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन सीन इन क्रोमोसोम। तो ट्रांसलोकेशन इन बर्किट लिम्फोमा, इन बर्किट लिम्फोमा क्या होती है? ऑप्शन 1 12-14 ट्रांसलोकेशन, 12-14 ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन 2 8-14 ट्रांसलोकेशन, 8-14 ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन 3 4-8 ट्रांसलोकेशन, 4-8 ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन 4 12-18 ट्रांसलोकेशन, 12-18 ट्रांसलोकेशन। फिर से देखिए, ट्रांसलोकेशन बर्किट लिम्फोमा इज 12-14 ट्रांसलोकेशन, 8-14 ट्रांसलोकेशन, 4-8 ट्रांसलोकेशन, 12-18 ट्रांसलोकेशन। एंड द राइट आंसर इज 8-14 ट्रांसलोकेशन, 8-14 ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 पूछ रहे हैं, इन बीटा थैलेसीमिया देयर इज। तो ट्रू अबाउट बीटा थैलासेमिया। ऑप्शन 1 इंक्रीज बीटा चेन, डिक्रीज अल्फा चेन, increase beta chain, decrease alpha chain. Option 2 decrease beta chain, increase alpha chain, decrease beta chain, increase alpha chain. Option 3 decrease beta chain, decrease alpha chain, decrease beta chain, decrease alpha chain. Option 4 increase beta chain, increase alpha chain, increase beta chain, increase alpha chain. फिर से देखिए, ट्रू अबाउट बीटा थैलासेमिया, डिक्रीज बीटा चेन, डिक्रीज अल्फा चेन, इंक्रीज बीटा चेन, डिक्रीज अल्फा चेन, डिक्रीज बीटा चेन, इंक्रीज अल्फा चेन, डिक्रीज बीटा चेन, डिक्रीज अल्फा चेन, या इंक्रीज बीटा चेन, इंक्रीज अल्फा चेन। एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज डिक्रीज बीटा चेन, इंक्रीज अल्फा चेन, डिक्रीज बीटा चेन, इंक्रीज अल्फा चेन इन बीटा थैलासेमिया। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। क्वेश्चन 127, stem cell disorder affecting all the 3 cell lines, it is platelet, RBC and leukocyte is. The stem cell disorder affecting RBC, WBC and platelet is. Stem cell disorder affecting RBC, WBC and platelet is. Option 1 hemolytic anemia. Option 1 hemolytic anemia. Option 2 paroxysmal cold hemoglobinuria, paroxysmal cold hemoglobinuria. Option 3 paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Option 4 Blackfan diamond syndrome, Blackfan diamond syndrome. फिर से देखिए, स्टेम सेल डिसऑर्डर अफेक्टिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट इज hemolytic anemia, paroxysmal cold hemoglobinuria, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, Blackfan diamond syndrome. And the right answer is paroxysmal cold hemoglobinuria, paroxysmal cold hemoglobinuria. Question number 128 देखेंगे। Question number 128, in polycythemia vera all of the following are seen except, ठीक है, true about polycythemia vera are all except. Option 1 thrombocytopenia. Option 2 increased GI bleed. Option 3 thrombosis. Option 4 transient visual loss. फिर से देखिए, ट्रू अबाउट पॉलीसाइथेमिया वेरा आर ऑल एक्सेप्ट हाइपर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इंक्रीज GI bleed, थ्रोम्बोसिस या ट्रांसिएंट विजुअल लॉस. एंड द राइट आंसर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. देयर इज नो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन पॉलीसाइथेमिया वेरा. देयर इज नो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.